Ajay-Atul, you are back with a bang with the film Jhund starring Amitabh Bachchan and directed by Nagaraj Manjule, with whom you, of course, collaborated earlier on Sairat. You know, we only have heard two songs from this album so far. Of course, the songs are Lafra and the title track of the film, uh, which has put everybody to groove. So, congratulations. Thank And you. what more can we expect from the music of Jhund? There are two songs more which are actually different numbers, because these are like hard hitting, I can say, most massy kind of numbers, and those are mostly inspiring and most, you can say, Revolution. mixed with it's a little bit revolution into it, little bit uh, inspiration in it. And as you know, the film is about sport. Yeah. So it has that flair also in it. So those songs are have sung by Sid Sri Ram, and Lafda Zhala, that Badal Se Dosti, and Lat- Latmar, that is one more song. Those songs have been written by Amitabh Bhattacharya. Aaya Ye Jhund Hai was written by us. And sung by Atul. Yeah. Lafda is sung by me. Nice. You know, staying with the June and its music. So, what inspires you outside the music? Like traffic sounds, local train, beaches, river, mountains, conversation, or other things around you? Nature. I would say nature. Nature, traveling, riding. My hobbies are like this. It's everything around you. Even if you are putting a indicator in your car, it sounds a tick, 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 tick. So immediately your head starts, our head starts uh, turning into something out of it. We get the rhythm out of it. So even if sometime some horn wala goes, like big truck, that also plays something hilariously dangerous horn. But we get something out of it. It's not that we get. It just music. I'm saying it's all over. If you get to listen what it is saying, you will understand. You will get inspired. It's not that. Sometimes it's funny. Sometimes it's very melodious. Sometimes it's very horrible. But there is a music all the time, according to us. So you have to understand what is beauty out of it. So even the sink runs some water and some toop, Sur. toop. Even the consistency changes, but the swar comes out of it, which you can hear. Even the fan sometimes you get the rhythm out of it. It is all for us. Music is all over. It doesn't just comes with the instrumentation. It doesn't just comes with instrumentation. Music and that this consistency of some rhythm, and there is swar in all over you. It's all over. Around you. But I can definitely tell you that we use something which is very important. We felt very important for us to use in Jhund, with sound of जैसे बेड़िया तोड़ना होता है ना, जो बेड़िया होती है उसको तोड़ देने के बाद जो 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 एक जैसे एक आवाज आती है. We use that sound, and we really wanted that sound to be in this song. And same time we used some debris kind of hard hitting sound. जैसे एक लात मारने के बाद जैसे लगता है कि पूरी दीवार जो है वो टूट रही है. Every time you hit that with your kick, whenever you are kicking it, something is breaking out of from that wall. Something see, देखने के लिए ये game है. It's a football, but there is lot more happening in the film. Apart from football. So whenever you are kicking, it's not just the ball. It's something more. You are getting free from the worries. You are getting free from your poverty, from your illiteracy, and you are kicking something which you have been ignored all your life. All your life, the Jhund. If you go to the lyric and you will understand, so you will feel that what has been written into it and what is the pain they have. What kind of pain सबने देखा है, फिर भी अनदेखा Jhund है. So you will understand what is that ignorance is.
So that is what we are trying to achieve. So when the kick goes, it feels like it's break, not just the wall, but the bedia in heart also. So then please give us few lines from Lafra and from the title track. 1, 2, 3. खाने को पीने को साबुन से धोने को बिंदा से आया ये झुंड ये मस्ती में जीना है लेना न देना है फुर्सत से आया ये झुंड है ये रे कटरेली है नोटों में काय को चिल्लर चबाने का लिटर में है जिंदा तो काय को क्वार्टर दिखाने का ऐसे में डर क्यों लगा है कर्फ्यू जैसे कि भारत बंद है like that it goes like that and then the trumpet got most attention I can say yeah it has become people are liking the trumpet. They are giving their comments about the trumpet also, and it has that single trumpet can make so much of difference, you know. It has something unique into it. You know, Jhund is of course a sports drama based on the life of Vijay Bharse, that's the founder of the NGO Slum Soccer. Mr. Bachchan is playing Vijay again. So is there a song in the album which have vocals by Mr. Bachchan? No. We didn't got that opportunity. But yeah, this was a very superb idea. You, of course, teamed up with Nagaraj Manjule earlier for Fandry and for the 2016 National Award-winning film, Marathi film Sairat, which features one of the finest music of the recent time, especially the song Yad Lagla, or even the title track. So do you think there is an extra pressure on both of you this time because you need to match what you delivered with Sairat? What happened is, after Sairat, every time, whatever we work, it's not about we are working with Nagaraj or not. Every work we are doing is getting compared with Sairat only. So it's now we are immune to that comparison. So and not with just our work. Everybody, every other music director's work is getting compared with Sairat. So everyone, all our friends also tells us कि हम झिंगाट कैसे बनाए. Even we cannot do झिंगाट. So there are many things which we cannot do again. But yeah, इस चीज का डर हमेशा किसी ना किसी को होता है कि वो कंपेयर होगा. But उसका प्रेशर अगर हम लोग लेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे. Sairat as an album, much before it was remade in Hindi as Dhadak, the whole country was dancing to Jhingat. And then we discovered the other gems in that movie. Out of the many memories you have of Sairat, if I can request you to share one over others, the most enduring memory of yours of Sairat, which would that be? Would you say recording in LA? Yeah. That's the most. Like that is the high point of our life only. It's not just the Sairat's best memory, but it brought us so much. Like, we are recording something and we are not just recording, but after going there, we realize that we are representing our Indian music, because that till then, I don't know if now or not, no Indian movie has been recorded with Hollywood musician, and not in Hollywood studios also, even like studio like Sony itself. So that is, it brought so much of pride and honor to us, which I cannot tell. That अभी तो हम लोग बात कर सकते हैं, तब तो रोना आ गया था, मतलब सीरियसली आंसू आ गए थे. तो इस चीज का गर्व भी लगा, चलो हमारी आ गई, और इस चीज का बहुत ज्यादा आनंद हुआ कि we could do this. और ये अचीव करने के लिए हमें, जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं, 30 years लगे हमको ये to achieve this. तो इस चीज की खुशी है. It shows and sounds terrific. Then please give us few lines from your favorite song from Sairat. याड लागल ग याड लागल ग रंगल तुझ्यात याड लागल ग वास हो सातीये कस्तुरीचा चाखल या वार गोड लागल ग. You know, we always say movies move you, but with both of you, it actually happened. Would you like to share and tell us the film that changed your life and really changed your life?
Yes. The movie which changed our life in entirety, that was Appu Raja. And while saying this, I feel very sad at one point because I got something new that day, and I realized something. Till then, our brain and our body was reacting to Boppida's music, and just today he's passed away. Okay, so from that time, all that disco and all that, we we heard that score of Appu Raja when the title track hits and the score comes. That score literally touched so much, and बहुत छोटे थे, समझ नहीं पाए, लेकिन क्यों रोना आ रहा है तो समझा कि ये म्यूजिक की वजह से आ रहा है. सो रिवाइंड करो, वापस सुनो. VHS आते थे तब, वापस सुनो और सुनते सुनते पता चला कि यार म्यूजिक वो नहीं होता है जो सिर्फ तुम्हें नाचने पे मजबूर करे. म्यूजिक वो हो सकता है और होना चाहिए जो दिल को छुए. और तब पता चला कि इतना बड़ा गहरा दिल है, तब तक पता ही नहीं चला. So that's how we realized what music can make you feel. Till then ऐसा नहीं था कि कई गाने नहीं सुने थे, बहुत सुने थे. रहना बीती जाए सुना था, बहुत सारे गाने सुने थे, लेकिन शायद उतनी मैच्योरिटी थी नहीं, इतने मैच्योर हुए नहीं थे. एंड वो टीनेज का वो दौर चालू होना और ये सुनना एक बात हो गई और कुछ नया मिल गया, जैसे समथिंग विच लिटरली टच्ड योर हार्ट, योर सोल. And then since then we became fan of Ilayaraja sir. Appu Raja बैकग्राउंड स्कोर, वो ये मैं बात कर रहा हूँ कब की, जब कैसेट भी नहीं पहुंचते थे यहाँ पर. मतलब चेन्नई से साउथ के गाने तो फिल्म तो छोड़ो, कैसेट भी नहीं पहुंचते. It is 90 और उस जमाने में ऐसा कुछ म्यूजिक इतना प्योर कुछ होता है ये हम जानते ही नहीं थे. जैसे अजय ने बताया ना कि हम लोग आई एम ए डिस्को डांसर और वही सब सुन रहे थे. अचानक से आके ये म्यूजिक ने जो दहला दिया, मतलब ऐसे हिला दिया कि म्यूजिक, व्हाट म्यूजिक, अच्छा इसमें लिरिक भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ ट्यून. तो मतलब म्यूजिक की कैपेसिटी क्या है, व्हाट म्यूजिक कैन मेक, वो हमें रियलाइज हुआ. हम में खुद में ही कुछ अलग पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्यून. Let's talk about your music process. How do you cast voices or decide which singer will sing which song? So say for the title track of the film Sairat, you chose to work with a singer. I really like her voice. It was Chinmay Shripata. Instead of collaborating with Shreya Ghoshal, who sang the other heart-touching number Jiva Dangla from the film Jogwa for you guys, which also got you a national award. See, Chinmay's voice we really loved because we worked with her in a very tapori number we did, which was Mera Naam Meri Hai in Brothers. So, but then we wanted Chinmay to sing that song because she's an amazing singer. Now, after that we heard what Chinmay is capable of. Then we understand that she sing that soft number so beautifully. And here we wanted that somewhere folk khanak with the softness. So that's why we wanted her to sing this song. And after all, see, Shreya Ghoshal, we are like every other song of our Shreya Ghoshal sings. So it's just we wanted something new to try, and Chinmay has sung it so beautifully. So when you record with established singers like Shreya Ghoshal, like Hariharan ji, or with Sonu Nigam, do you record multiple times with them, or it's always the first or second take that's good to go? No, it takes time. It takes time. 3-4 hours at least. It is all depend upon that singer also, because everyone has his own style. Sukhi ji has his own style. Sonu ji has his own style. And Hari ji has his own style. So it depends how they are comfortable. Basically, we don't follow any style. We just make them comfortable. So then, would you like to share any anecdote from one of such recordings where you took maximum time or you spent maximum time on a song? Again, I have memory of Sonu Nigam. Abhi mujh mein kahi. We were busy in background music of Agneepath. And बस एक ही गाना बचा था, अभी मुझ में कहीं, जो डब करना था. तो सोनू जी से डब करवाने का जब डिसाइड किया, तो he came into studio and he started singing. बट आधे पौने घंटे बाद उनको लगा कि ये नहीं बज रहा है मेरे से, आज नहीं हो रहा है.
तो ही सेड के अजय अतुल देखो, मैं अभी नहीं करता हूँ इसको डब, लेट मी गो एंड रियल्स फर्स्ट, एंड जैसे ही होगा हम लोग 1-2 दिन में पूरी तरह से मैं रियाज करके आता हूँ, 1-2 दिन में करता हूँ। जैसे ही सेड कि 1-2 दिन, तो आई थॉट कि अभी 2 दिन तो कुछ नहीं हो सकता। तो वी गॉट अगेन बिजी इन बीजीएम, all live session and everything was going, and that day we were working morning 8 o'clock to night almost 3:30, and all of a sudden 10 बजे मैंने देखा सोनू निगम कॉलिंग, मैंने उठाया कि he started singing the song on the phone, इसी से अतुल भैया बज रहा है ये बज रहा है, सुन मैं अभी आता हूँ। एंड आई वाज लाइक कि इतने म्यूजिशियन बैठे यहाँ पे 40-50, आपको कभी डब करेंगे हम लोग, हो ही नहीं सकता। तो ही सेड कि मैं अभी आता हूँ, मैं आई सेड कि आई लेट यू नो, एंड मैंने जस्ट फोन ऐसे पलटी करके रख दिया। देन ही वाज कॉलिंग, आई वाज नॉट पिकिंग अप द फोन। ऑल ऑफ अ सडन अराउंड 1 o'clock इन द नाइट किसी ने स्टूडियो का दरवाजा खोला, एंड आई हर्ड दैट अभी मुझ में कहीं कोई गा रहा है। एंड आई सेड हु इज सिंगिंग दैट? सर सोनू जी इज सिंगिंग। वो रात को 1 बजे आके स्टूडियो के बाहर बेंच पे बैठ के वो ही वाज रिहर्सिंग द सॉन्ग, एंड उन्होंने कन्विंस किया हमारे म्यूजिशियन को कि मुझे गिव मी हाफ एन आवर और उसके बाद आप डब करना। तो म्यूजिशियन सोनू निगम के प्यार में वो ऑलरेडी है, तो वो दे सेड कि नहीं हम लोग रुकते हैं अजय अतुल सर, कर लो। तो रात को 2:30 बजे आई कॉल्ड अप करण मल्होत्रा, वो लाल लाल आंखें लेके आया, एंड देन सोनू जी वेंट इन द बूथ, एंड लिटरली विद इन 40 minutes he sang the whole song अभी मुझ में कहीं, कि जो आज हिस्ट्री बन चुका है। So then please give us few lines from your favorite song from Agneepath. Okay. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। Nice. You know, your melodic core is very strong. You always surprise us with your music arrangement, sometimes with reverb effects, sometimes through chorus, or with instruments like, say, blowhorn. So, is there a new instrument that you have used in Jhund? Maybe the one you generally don't use in your song. That is, I would say that is a surprise. Whoever is in love with Ajay-Atul music and Ajay-Atul sound, they will definitely get a little bit surprised with Jhund sound. See, the two songs which you will hear now, which are we literally tried to do something else that what Ajay-Atul normally used to do. We tried to change the sound of our arrangement into it. जो हम लोग कर रहे हैं वो तो हम लोग करते ही है। एक जो चीज थी जो हमने नहीं की, वो ऐसी उसकी बड़ी सारी खूबियां है, वो हमने कभी ट्राई नहीं की थी, लेकिन वी ट्राइड मोस्टली आई कैन से electronic-ish in those two songs. Now imagine those two songs are seriously very emotional and inspiring, and now we tried all that electronic-ish things in that because we wanted something to sound very contemporary and very emotional at the same time. So to then both of you, you know, every musician has that elements that describes him in their sound. So if I can ask you to describe yourself in 3 keywords that describes the sound and style of Ajay-Atul, what would that be? Epic. Basically, I feel everything we do, it comes to us in an epic way only. Whenever we think, it comes like that. So epic, grand, majestic, melodious.
See what is happening now. We all are fan of Lakshmikant Pyarelal, R.D. Burman, and lot of musicians, Shankar Jayakishan and all. So that time we used to hear the cinematic sound in cinema. Like the whole orchestra was playing. All the musicians were coming together and they were playing together. Somewhere we feel we have lost that sound. So our try is to keep that cinematic sound. That described you guys. You know, you must have come across some really weird people and crazy demands while composing music for the movies. Don't ask. So, would you like to share your funny, filmy story, maybe about a producer who brought some audio CD to you and requested you, "Bhai, can you copy this or make a sound like this?" See, I have one small memory. हम लोग एक प्रोड्यूसर से मिलने गए थे, तो he started narrating a situation. कैसा ऐसा है, लड़का है और वो लड़का भागता है और शादी के मंडप में वो जाता है, एंड देन उसके ऑफिस में, उनके ऑफिस में, एंड वहां पे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लड़का ट्राइज टू इम्प्रेस हर, द गर्ल. तो सुनाओ. हमने बोला सर सॉरी वी कैन नॉट डू, हम लोग ऐसे बैंक वैंक हम लोग नहीं रखते, हमें पूरा स्टोरी प्लॉट कुछ सुनाओ, डायलॉग के साथ हमें स्टोरी सुनाओ, तब हम लोग कुछ कर पाएंगे. Then he said, अच्छा तो आप वो तरह के कंपोजर हो. So these funny things happens. I have to talk to you about Natrang, that 2010 famous Marathi film that features your music. My favorite one from that album is Vajle Ki Bara. What type of challenge you face while composing for a film that is placed in a culture or a language that you are most comfortable with? Then it's not challenge. Because if you ask us, what is a challenge to make a symphonic music for Sairat? That could be a challenge. Because we haven't learned anything in our life. What is a challenge to make a song out of Yaman Rag? Because we haven't learned Rag Sangeet. That could be a challenge. किसी पंजाबी सिंगर से आप ये पूछे कि तुम्हें हीर गाने के लिए क्या चैलेंज था, नहीं होगा चैलेंज उसको. उसी तरह से मराठी संगीतकार को लावणी करने में चैलेंज नहीं हो सकता, वो खून में है, उसमें चैलेंज नहीं है. वो इट्स लाइक यू आर डूइंग, ये ऐसी चीज है जो सबसे इजी आपको, अब ये तो इजी हो गया, अब इसमें और क्या अच्छा कर सकते हो, वो हमारे लिए ज्यादा सोचने वाली बात थी. सोचा बहुत, चैलेंज नहीं था. इट वाज द मोस्ट अमेजिंग पेपर, लाइक जैसे कहते हैं ना वो एग्जाम. So those tunes came very naturally, very organically. You made that a household song. I mean, I know people from other parts of India, non-speaking Marathi people from Hindi belt loving that song. Then please a few lines of Vajle Ki Bara. Yeah, that line is ours. See, most of the time हमारे आधे से ऊपर गाने जो, I can say 90% of the songs, all the hook lines are given by us only. Oh. चैत पुनवेची रात आज आलिया भरात दड काळ जात तोल राहीना, राखली की मर्जी तुमच्या जोडीला मी आले, फिरतीच्या या रंगीराया चिंबवली मिनाले, राया सोडा तरी हाल मेले नाही बरी भेटू कवा तरी साजणा, जाऊन जाऊ द्या नगरी आता वाजले की बार, मला जाऊ द्या नगरी आता वाजले की बारा. You know, be it Chikni Chameli or Suraya from Thugs of Hindustan, what is a standard soundscape of Ajay-Atul looks like? Like, what are the instruments which definitely will be part of the sound design of Ajay-Atul? Can't say, sir, because it always changes with the song, need of the song, need of the film, need of the earth of the film, the soil of the film, the language of the film, character of the film. It changes most of the time. एक genre जो होता है, कभी हमने ये नहीं सोचा कि यार रॉक में हमेशा ड्रम ही क्यों बजाते हैं, you know, यार तो ड्रम्स के बिना रॉक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी रॉक में और कुछ हो सकता है क्या, तो उसमें तबला ऐड हो जाता है, तो उसमें सितार ऐड करेंगे, सितार को वो इलेक्ट्रिक सितार बना देंगे, वो ऐड हो सकता है. कुछ चीजें जो रॉक जो फॉर्मेट होता है ना, उस वजह से जाती नहीं है. वैसे कुछ चीजें हैं जो हमेशा होती है हर गाने में, जैसे पियानो होगा हर गाने में, मतलब जैसे वो भगवान का नाम होता है ना, उस तरह से हमारे हर गाने में वो होता ही है, चाहे आपको सुनाई दे ना दे, लेकिन वो होता ही.
it's a very famous story how you bought your first harmonium. But what is your relationship with the new technology now? Yeah, we love, We adapt- we think that we have to get whatever the best we should get. You should wait for some days, but you should get the best, and you should work with the best. So we adapt lot of things very fast. See, एक चीज आज हो गई है बहुत अच्छी है कि तब ना एक हारमोनियम भी आती तो भी 4-5 हजार में आती थी, अगर आती भी होंगी तो। आज ये चीज है कि आप अपने आईपैड के साथ या तो अपने फोन के साथ भी इतनी सारी एप्स है 200-300 रुपए में मिल जाती है, और उससे भी सस्ता कीबोर्ड मिल जाता है आपको, इतना सा छोटा सा कीबोर्ड भी मिल जाता है। तो मुझे इतना प्यारा लगता है ना कि चलो मैक्सिमम शायद किसी को 10,000 रुपए भी मिल गए ना, तो he can at least work something out and see कि how it is sounding। हमें यही चीज करने के लिए लाखों रुपए लग गए थे, वो नहीं पॉसिबल हो तो पाता था तब भी। अब इतना ये टेक्नोलॉजी का फायदा है, बाय द वे आई एम टेलिंग यू दैट, बिकॉज इकट्ठा अपने ही फोन पे हर 4 ट्रैक रिकॉर्ड कर सकते हो अपने ही फोन पे, वो तो था नहीं तब। और ऐसे उसके लिए ये नहीं कि आपके पास आईफोन ही होना है, जो भी आपके पास कितने फ्री इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी फोन रहेगा वो डजंट मैटर, कितने सारे फ्री इंस्ट्रूमेंट्स फ्री आ गए। देखो टेक्नोलॉजी घर घर में, अब इसका यूज कैसे करना है ये तो आपके ऊपर रहता है। सो इंस्ट्रूमेंट भी सब घर में होता, कितने जैसे हमें हमारी हारमोनियम मिली, वो जो आदमी है जिन्होंने अपनी बहन के लिए खरीदी हुई थी, किसी ने यूज नहीं की बहन को, उन्होंने अपनी चाव से लिया था, उनको वो खुश करने के लिए, पैम्परिंग के लिए, उन्होंने सीखा नहीं, घर में पड़ी थी, वो धूल मिट्टी चढ़ रही थी, उनको लगा कि यार आपको जरूरत है मैं आपको दे दूंगा, हमें मिल गई, आज भी हमारे पास है, वहां सिटिंग रूम पे उधर ही बाहर अभी भी है, हमारे पास आज भी है। इंस्ट्रूमेंट के साथ हम हमेशा एक चीज बोलते हैं, ये बहुत हमें, एक देखो एवेटार नाम की फिल्म है, वो जाता है, उसको वो उसका वाहन ढूंढना होता है जिसके ऊपर वो राइड करना है, तो ही आस्क दैट गर्ल हाउ कैन आई फाइंड इट, किसके ऊपर मैं राइड करूं, हाउ कैन आई फाइंड इफ आई गेट हिम टू सी। वो लड़की कहती है नहीं, यू कैन नॉट फाइंड इट, ही विल। वैसे ही इंस्ट्रूमेंट का होता है, आप इंस्ट्रूमेंट नहीं चुनते, इंस्ट्रूमेंट आपको चुनता है। so Ajay-Atul, I can't end this conversation without asking you what, you have been credited with giving one of the best Ganapati songs to the country, be it the Moria Moria from in Marathi, or the others, the Ganapati song from Agneepath. Is that the most, how do I put this, what is the trick of reinventing the same song in different languages, and every time you give us a new version of it? see we are, हम गणपति के भक्त हैं, तो अगेन जैसे अजय ने कहा ना कि वी डोंट इन्वेंट एनीथिंग, वो ही भेज देते हैं, वो दिमाग में जो भी है, वो भी उन्होंने ये 2 ट्यून भी दी है, वो गणपति बाप्पा ने ही दी है। बोलने के लिए होता है भक्ति गीत है, लेकिन बात बताऊं, भक्ति गीत तो मैं ना एक ही चीज होनी चाहिए आपके पास, भक्ति, वो है, शायद इस वजह से आ गया। Ajay-Atul, thank you so much for talking to us. And in the end, may I please request you to maybe give a medley of your songs to end this conversation? देवा श्री गणेश, Yeah. तो देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है, धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा है देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश। Ajay-Atul, thank you so much, and best of luck. thank you Vishal, thank you so much. Thank you.